descending of subtropical jet stream, subtropical high pressure created by subtropical jet stream, and subtropical jet stream is moving south of Himalaya, और फिर बाद में यहाँ आ जाता है. तो yes, so यहाँ पर ये भी रहेगा भी. I said that मई जून में तैयार रहता है, मई में, and जून जुलाई में यहाँ आ जाता है. So it is in Himalayas and then very weak. I said that northeast trade wind, very weak northeast trade wind. तो ये गाड़ी चल पाएगी? Yes. So one, it is trying to give rotatory effect, but other is not giving the effect, so it cannot be completely rotate. Yes or not? Rotation के लिए आप वहाँ से move करा रहे हो, ये तो चक्का नहीं है ना, यहाँ से move किया है wind को, तो this wind will only move up to this, but the other wind will not be able to move, so it will not be able to convert into cyclone, and it will convert into cyclonic wave. जो आप लोगों को बार बार में मैपिंग में समझाता है, it will convert into sea surface temperature is good, everything is okay, it will convert into cyclonic wave. So it will convert into, यहाँ पे क्या बन गया? Understood? And this region is highly what? Heated. Rajasthan and Sindh region. Rajasthan and Sindh region is highly heated. And if I am talking about and here we have what? और ये जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून की तरह है. Understood? Which one I said that? And now this cyclonic wave started what it is now? Taken towards what? Central part of India and north part of India for reaching towards this low pressure. Cyclone follows the path where there is a low, and they started moving towards this, and then southwest monsoon started draining towards along with this cyclonic wave. Yes, and therefore I said West Bengal, Odisha, Northern Andhra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, MP, UP, I said that this part of MP, then Delhi, Haryana, Punjab. So they are able to get rainfall, and किसकी वजह से? So it is good for India or not? Otherwise ये नहीं होता तो this region is completely dry and drought. So it is thanks to cyclonic wave forming in the July and September, and it is not cyclonic. Cyclone में नहीं convert हो रहा है, it is converting into, so it is making effective instead of what? Destructive. Understood? So आप लोग कई बार मेरे से सुनते होंगे this is the reason cyclonic wave is what? So when it is creating last week of June or July to September. Understood? So which are the two periods we have seen? April and May, and then July and September. April and May, what is the sea surface temperature? 28 to 29 degrees Celsius in the Arabian Sea till the depth of 20 meter, and in the Bay of Bengal branch 30 meter. Understood? And then in the Arabian Sea it is striking Malabar coast and गुजरात कोस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स गुजरात, पहले वो गुजरात की तरफ नहीं मूव करता है, लो प्रेशर किधर बनता है? कराची, देन इट टर्न टुवर्ड्स गुजरात. अच्छे समझ में लेना, कहीं भी किसी भी किताब में ये सब मेंशन नहीं है. अंडरस्टूड इट? गेटिंग माय पॉइंट नाउ? एंड इन द जुलाई सितंबर, एंड देन बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक हिट करता है? महानदी टू कावेरी. तो एक याद रखना अप्रैल में, एंड एक याद रखना व्हाट? दिसंबर. दो समय महानदी टू कावेरी का नाम लूंगा मैं. 2 times आई टेक द नेम ऑफ विच मंथ? अप्रैल, मई एंड दिसंबर. अंडरस्टूड इट? क्लियर? समझ में आ गया? एंड जुलाई एंड सितंबर में जो बना वो साइक्लोनिक वेव रहा. अंडरस्टूड इट? सो आई सेड दैट क्योंकि दोनों विंड को क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एनफ. नाउ अक्टूबर नवंबर इट स्टार्टेड व्हाट? Coming down.
Yes or not? September में sun किधर आ जाएगा? It started coming over there, but this Indian continent is very warm. अरे this water is also very warm. कितना जल्दी ITC को जाने नहीं देगा. It is coming down. Understood it? अब north east trade wind and south east trade wind become strong or not? बनेगा. चलिए. So I say cyclone आएगा. Yes, developed tropical cyclone. अक्टूबर नवंबर और हुदूद कब आता है? The 15th of October in 2015 around, in the month of October, in the Andhra coast. So ITCJ came now, and what is the sea surface temperature? 30 degrees Celsius. Depth is 40-50 meter. Sorry, 52. 60 meter. And then Arabian Sea is also able to get what? Sea surface temperature, how much? 20. But the depth is 40. Understood? And then ITCZ is also there. So there is a what? Good. What is a rotatory effect? And they will convert into what? Tropical cyclone. And when it is able to convert into tropical cyclone, और इस समय this time low pressure exists between, I said that Mahanadi to Godavari and Krishna. Deltas पे नहीं बनता. Deltaic regions are what? What is it? Cyclone effect reduces. तो वहाँ पे fresh water is more. Understood that? So Mahanadi delta के south में. And from here to here. इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे गजपति, गंजम, खोर्धा and all these districts are what is it? And यहाँ पे श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, एल्लूरू. This is the reason where it is getting cyclone, not south of it this time. And remember that deltaic region doesn't get cyclone. So which is the best place on the western coast, eastern coast of India to live? Mahanadi Delta, Godavari, Krishna Delta, as far as want to save yourself from, and then which delta? So I said that, clear? And they will affect, और यहीं पर आपको गुजरात, sorry, that is a Hudhud cyclone has affected. Hudhud cyclone developed, cyclone created, and the low pressure followed, and then affecting which region? Cyclone का formation तो पता ही है, अब इसमें क्या मैं बताऊँ? Understood it? And in the region of Mahanadi to Godavari. Which region I said that? कौन सा region? Godavari. And in the western coast it is where it is affecting? Gujarat and Maharashtra. Gujarat and Konkan coast. Which coast? Gujarat and महाराष्ट्र. इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ओनली यही है कि लो प्रेशर बनता है. अंडरस्टूड? और जिधर लो प्रेशर बनेगा इट विल अटैक. अंडरस्टूड इट? समझ में आ चुका? 1 अप्रैल में अरेबियन सी 28 to 29 till the depth of 20 meter, and it can affect Gujarat and Malabar. In the Bay of Bengal, Mahanadi to Kaveri 28, 29, 30. Understood? Then July, September, no cyclone, but it is converting into cyclonic wave, and it helps in dragging the cyclonic wave, southwest monsoon towards central India and northern part of India. And then this is a blessings for what? Indian, for the what? Rainfall, and India is the 5th largest country in the form of receiving of what? Rainfall.
Understood it? Thereafter I said, हमने क्या बोला? October, November. Sea surface temperature in the Bay of Bengal reaches up to 30 degrees Celsius and depth is what? 50, and in the Bay Arabian Sea till the depth of 40 meter. And they have been developed, and they, on the basis of low pressure, attacking between Mahanadi and Godavari Krishna. And then I said that attacking along the what? Western coast in the Arabian Sea, Gujarat and Konkan coast, but they do not provide this kind of, the kind of low pressure system जो available होना चाहिए, they are not providing. So therefore cyclones formed in the Arabian Sea remain within the Arabian Sea, not able to reach. So therefore the less, and जो बनेंगे भी तो उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? Rotatory effect बनना चाहिए. Number of islands is what? Less in Arabian Sea and all. So next one it is coming. समझ में आ गया? Next one is December. आप last year जाएंगे in the what is an I said that sorry Guru in 2014 था 2015 14 है 14 sorry 2014 हो दो. In 2015 December, in 2015 December, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी जो दिसंबर गया वो कौन सा था? आपने देखा था तमिलनाडु के पास एक साइक्लोनिक इफेक्ट, कौन सा? एंड उससे पहले 2015 में there is a heavy rainfall in the Chennai. So let us go and see. In the December month, sun कहाँ चला जाएगा? September 22nd September को यहाँ आता था, and December month it will go. So in December month, next we are going to see October November is clear. December. In the December month, what happens? ITCZ completely shifts into the southern hemisphere, and it is the blessings पे depend. Blessings मतलब it is a destructive nature of the God पे depend करता है. अच्छा यहाँ पर क्या साइक्लोन यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है? यहाँ पे सारे साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं या सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए? आप लोग आईएएस ऑफिसर के काबिल हो हैं, लेकिन क्या चाहिए? कंपैटिबल कंडीशन, कंपैटिबल नॉलेज, सो विच इज रिक्वायर्ड. यस, ऑल ऑफ यू कैन कन्वर्ट इनटू सुपर साइक्लोन. यही तो है. आप लोग छोटे छोटे क्या है, तो बे ऑफ बंगाल में जब ये आईटीसीजेड जला गया तो ही हैज लेफ्ट व्हाट इज सारे साइक्लोन बहुत सारे घूमते रहते हैं, बट ऑल आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द ड्यू टू द लैक ऑफ व्हाट? कंपैटिबल कंडीशन, ऑल व्हिच इज रिक्वायर्ड. सो यहां पर क्या छोड़ के चला गया? सम एटमॉस्फेरिक वोर्टिसिटी घूम रहे हैं भाई साहब, घूमे जा रहे हैं. अंडरस्टूड? बट somehow they are able to get some compatible condition. खींचना स्टार्ट किया, रोटेटरी इफेक्ट स्टार्ट, लो प्रेशर रोटेटरी इफेक्ट स्टार्ट. तो some low pressure, but I said that upper air divergence can what is can create. Understood? So these around this one, then possibility is there, they can what? Cyclone can form. लेकिन who will form? The leaving behind atmospheric vorticity. Which one I said that? Atmospheric vorticity. और ये atmospheric vorticity ITCZ already has gone down, so ITCZ is not going to play a role. So atmospheric vorticity there, then other factor can play a role which can make it what? More low pressure. खींचते जा रहे हैं upper air divergence some kind, क्योंकि वो हमेशा upper atmosphere में क्या होते रहता है थोड़ा बहुत, और वो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे ओवर द पीरियड जब मानसून भी करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अपर एटमॉस्फेयर इज समथिंग कंप्लीटली डायनामिक. और वो उसमें से एक साइक्लोन डेवलप हुआ एंड इट विल अफेक्ट, हमने क्या बोला था, अप्रैल में एंड दिसंबर विल अफेक्ट फ्रॉम विच रीजन टू रीजन, महानदी टू कावेरी. सो दिस डेवलप्ड साइक्लोन कैन अफेक्ट एनीवेयर वेयर द लो प्रेशर सिस्टम इज अवेलेबल. Up in 1999, the Odisha coast has faced in the last week of December super cyclone and 10,000 people lost. No disaster management.
इंडिया स्टार्टेड बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम द 2005 ऑनवर्ड. उसके बाद भी नहीं था, अब सुधार हो रहा है. I said, understood? And it can affect. Last year in the 2015, if you'll see last to last year, there is a one cyclone kind of structure formed and it was moving towards Agra. But suddenly it get weak. The low pressure system become weak. Then it started moving. तब तक इसने भी अपनी एनर्जी खो दी. And then low pressure system formed in Chennai side. And this is not developed into cyclone, but it started coming towards Chennai. अब sorry यहाँ से यहाँ आकर घूम रहा था. Understood? Then it turned towards, and then Chennai has been affected by. समझ में आ गया? So in December में क्या होता है? Yes, tell me. What is in the December? What is the atmospheric vorticity? ये रट जाओ. What is there? What is there? Atmospheric vorticity. Under the compatible condition, they can develop into what? Cyclone. And on the basis of the low pressure system available between Mahanadi to Kaveri, they can affect any one of these. समझ में आ गया? So which are again I am going to revise, and then thereafter cyclone will finish. समझ में आ गया इंडिया का कौन कौन सा रीजन अफेक्ट है? अप्रैल एंड मई, महानदी टू कावेरी.